Hello everyone. Am I audible? So should we start? Okay. This is the basically sheet. Hope the preparation is going very well. This is basically a short and fast doubt session. Let me open the Python revision sheet I have created a few hours back. Okay, see. These are the few full forms of the networking. HTTPS, Hypertext Transmission Protocol Secured. And this should be HTTP only. When we do any kind of communication in the secured manner, then we use the protocol HTTPS. Means all the transaction will be in the form of encryption. Matlab data will be sent to the server in the encryption form, and the data will be received from the server to client in the encryption form. The second one is HTTP. The full form is Hypertext Transmission Protocol. It's a simple conversation between the client and server without encryption. Voice over Internet Protocol. This is VoIP. SLIP, Serial Line Internet Protocol. NTP, Network Time Protocol. SMTP, Simple Mail Transfer Protocol. FTP, File Transfer Protocol. TPP, Point to Point Protocol. TCP/IP, this is a very important protocol in the Internet. Transmission Control Protocol and Internet Protocol. BPS, if the B is in small, then we can use bits per second. Means one bit will be transferred at a time. Now the capital BPS means bytes per second. URL, Uniform Resource Locator, modem, modulation and demodulation. All the full forms are over. Now, these are the few questions based on functions. Define list, define a function, L process, LST, to count how many two digits equivalent numbers are there. Okay. Hope you understand about the user defined function. आपको आइडिया होगा यूजर डिफाइंड फंक्शंस का. तो ये हमारे फंक्शन का नाम है. This is a parameterized function, and at the time of calling the function we have to pass one parameter, that is a list. और उस लिस्ट में ऐसे नंबर्स हमें काउंट करना है जो टू डिजिट के इक्विवेलेंट नंबर हो. What do you mean by two digit equivalent number? One second please. For example, 34, 55, 66, 78, in which there are two numbers which are equivalent, 55 and 66. All right. So give me 1 minute. Let me start the pie chart. Then I can explain you this question practically. Okay. These are all the programs we have developed in the last few days. And if you have any question or doubt, you can ask. Program file, test process. F is a keyword used to define the function. And what is the function given in the question? L process. L capital, P capital, ROCESS. LST, colon. LST is a list. This function will receive a list as a parameter. For I in LST, if I greater than equal to 10 and I less than equal to 99, that means it is confirmed the number is of two digit.
Okay. There are some minor problems coming, actually some related to the screen issues. Let me share the screen again. Can you please confirm the screen is shared or not? Okay. Sir, screen share. Okay, okay. Wait. Let me find out the option. I'm repeating the question. Give me 1 minute. Let me fix this issue because I've shared the screen from my side. Stream manage, send feedback, stop sharing. Now, please confirm 11 and providing the 0. That means it is a equivalent number. It is a equivalent number. कोई भी नंबर अगर 11 से डिवाइड होता है तो वो इक्विवेलेंट होगा, और ये पार्ट इंडिकेट कर रहा है कि वो 2 डिजिट का होना चाहिए. इफ एनी नंबर इज फॉलिंग बिटवीन द 10 and 99, it means it is equivalent. Then we have to raise the counter. C equal to C plus 1, and C will be assigned 0 outside. Okay, now we can return C. This is a function, and how it will be called? It will be called from the main. Just a moment. This is a comment. Main section. Main section is basically used to call the function. So I'm creating a list 10, 11, 22, 44, 55, 67, 89. You can tell me how many numbers are equivalent. This one equivalent, this one equivalent, 1, 2, 3, 4. There are 4 numbers which are 2-digit equivalent. Let me take some 3-digit also. Fine. Now, just a moment. R is equal to L process and passing the LST and print R. In the board examination tomorrow, you are not supposed to write these 3 lines. It is sufficient. But for execution point of view, these lines are required. जब तक हम इन लाइंस को नहीं लिखेंगे, हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा. Okay, just a moment. Let me run this code. Absolutely fine. There are 4 numbers which are 2-digit equivalent. Okay, fine. 1 second. You can write the answer with some message also. There are count of 2-digit equivalent numbers, comma. Okay, now the answer will be displayed with some appropriate message. Count, just a moment. It should be count. Right click again. Count of 2-digit equivalent numbers are 4. Okay, this question is over. If you have any doubt, you can ask. Okay, I have prepared a sheet of 10 pages. This one, this one, this one, and this one. So these are the 4 numbers which are completely equivalent. Okay, just a moment. Let me explain the procedure of this. Okay, so this complete list will be, at the time of calling the function, I'm passing a list. This list will be transferred in this LST, and the loop will execute from 1 in LST. So LST is containing 10, 11. I'm not going to write every number. You, for your
basically for your reference. So for I in LST, one number will be transferred in I. If I is greater than equal to 10 and less than equal to 99, yes, 10 हमारा 10 से 99 के बीच में आ रहा है, बट वो 10 11 से डिविजिबल नहीं है, तो हम इसे कंसिडर नहीं करेंगे. Now the 11 will be transferred. The 11 is coming between the 10 to 99. It means it is of 2 digit, and 11 is also divisible by 11 and providing the 0. That means it is a equivalent number. So I will raise my counter from 0 to 1. And now this C will be written back and store in this R. So R is a variable that will receive the value which is coming from the function, and R will be print. Understood? Okay. Let me see how the students are reacting on this question. Please, this stream, sir. Screening. Screen is not visible. Again, the student is complaining. Are you able to see the screen? Now please check. I'm doing best from my side, which I can do. No. Now? Now? Okay. Now the screen is shared. Okay, okay, okay. Fine. So one question is completed. Now we can move to the another question. These are 4 marks questions for your tomorrow examinations. Matlab the pattern of this question is 4 marks. Define function str process str to count how many words are starting with the capital vowel and ending with the small vowel. Again, a very good question. To count how many words are starting with the capital vowel and ending with the small vowel. Okay. इसके लिए भी हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं. ऐसे कितने वर्ड हैं जो कैपिटल वॉवल से स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे कि अमेरिका is starting with the capital vowel and ending with the small vowel. Okay. Aman, it is starting with the capital vowel but not ending with any vowel. तो हम इसे कंसिडर नहीं करेंगे. इसे हम कंसिडर नहीं करेंगे. ओके. यूएसए, it is starting with the capital vowel and ending with the small vowel. इसे हम कंसिडर करेंगे. इसे हम कंसिडर करेंगे. ओके. जापान, it is not starting with the vowel, it is not ending with the vowel. तो हम इसे कंसिडर नहीं करेंगे. तो होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. जब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, वी कैन नॉट गो विद सोल्यूशन, वी कैन नॉट गो फॉर सोल्यूशन. अब ठीक है, अब ठीक है. एक बार बीच बीच में मैं स्क्रीन शेयर. ओके ओके ओके, फाइन, गुड गुड, वेरी गुड. अब हम इस प्रोग्राम को बनाने जा रहे हैं. आप इसे देखिए और समझने की कोशिश कीजिए. ये वाला प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो गया है. नाउ वी कैन टेक अनदर फाइल just like that. Okay.
vowel start end. def व्हाट इज द नेम ऑफ फंक्शन। एग्जाम में जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो जो भी फंक्शन का नाम हो प्रॉपर आप वैसे ही लेंगे। साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि केस सेंसिटिविटी का, मतलब जो चीज कैपिटल में है वो चीज आपको कैपिटल में लिखनी है और जो चीज स्मॉल में है वो चीज आपको स्मॉल में लिखनी है। अब str में हमारे पास एक स्ट्रिंग है, एक मिनट, ये जो फाइल बनी है वो पाइथन की फाइल नहीं बनी, वो मैं टेक्निकली करेक्ट कर रहा हूं, आप 2 मिनट का टाइम दीजिए। .py एक्सटेंशन ऐड नहीं हुआ जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। refactor rename not fine। ओके, अब देखो हमारे पास पूरी एक स्ट्रिंग है एंड स्ट्रिंग मींस इट विल कंटेन लॉट ऑफ वर्ड्स। तो सबसे पहले हम इसे स्प्लिट कर लेते हैं, str डॉट स्प्लिट। स्प्लिट एक फंक्शन है, स्ट्रिंग का फंक्शन है जो पूरी स्ट्रिंग के सारे वर्ड्स को एक्सट्रैक्ट करके एक स्ट्रिंग स्ट्रिंग के सारे वर्ड्स को एक्सट्रैक्ट करके एक लिस्ट में ले आता है। तो फॉर I in data if I0 in AEIOU। I0 मतलब किसी भी वर्ड का पहला कैरेक्टर अगर AEIOU से मैच करता है that means that word is starting with the vowel। okay, now and operator I -1 means the last character of the same word in AEIOU। अगर उसका लास्ट कैरेक्टर स्मॉल AEIOU की रेंज में आता है तो इसका मतलब वो स्मॉल वॉवेल से एंड हो रहा है। और ऐसे वर्ड्स को हमें क्या करना है, काउंट करना है या प्रिंट करना है? काउंट करना है, ठीक है। तो आई विल टेक द काउंटर वेरिएबल 0 and when the condition will satisfied I will increase my counter variable by 1 और here we can print। लास्ट क्वेश्चन में हमने रिटर्न कराया था, इसमें हम फंक्शन में ही प्रिंट करा रहे हैं। तो नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ कैपिटल वॉवेल एंड एंडिंग विथ स्मॉल वॉवेल एंड कॉमा। अब इस फंक्शन को ऑपरेट करने के लिए कुछ डेटा चाहिए, तो वो डेटा हम यहां से पास कर लेंगे। पहले हम एक लिस्ट बना लेते हैं जिसमें अमेरिका, यूएसए, कॉमा राइट और कुछ और डेटा ले लेते हैं, इन्फो। अब देखो यहां पर ऐसे कौन से वर्ड हैं जो कि कैपिटल वॉवेल से स्टार्ट हो रहे हैं और स्मॉल वॉवेल से एंड हो रहे हैं। तो अमेरिका एंड यूएसए आर द टू वर्ड दे आर स्टार्टिंग विद द कैपिटल वॉवेल एंड एंडिंग विद द स्मॉल वॉवेल। ओके, राइट नहीं, इन्फो नहीं, तो इसका आंसर आना चाहिए 2। ओके, बट इसके लिए str प्रोसेस नाम के फंक्शन में मुझे लिस्ट पास करनी होगी और जब हम लिस्ट पास करेंगे तो वो डेटा यहां पर डिस्प्ले हो जाएगा। तो राइट क्लिक, रन। 1 second, not list, we have to pass the string। hope you remember कि ये क्वेश्चन स्ट्रिंग बेस्ड है, लिस्ट बेस्ड नहीं है। तो इमीडिएटली वी हैव टू रिमूव। और अब यहां पर कैसे पास करेंगे, जस्ट गिव मी 1 minute। अमेरिका, यूएसए एंड राइट एंड आफ्टर दैट एक कोई और वर्ड जो कि हम ले लेते हैं। तो इसमें अगर हम इतना ही रखें, राइट एंड यस। चलो अब देखो यहां पर ऐसे
कितने वर्ड हैं जो कि कैपिटल वॉवल से स्टार्ट हो रहे हैं और स्मॉल वॉवल से एंड हो रहे हैं? देयर आर ओनली 2। तो अब ये स्ट्रिंग पास होकर एसटीआर में पास होगी और एसटीआर स्प्लिट होगी, सारे वर्ड्स अलग अलग आएंगे और उसके बाद ये आगे की प्रोसेसिंग एग्जीक्यूट होगी। तो वेट, there are two words. Number of words are starting with the capital vowel and ending with the small vowel are two. Okay. Now we can take some shortage of first. कुछ और क्वेश्चन, कुछ और डाउट? ये भी आपका क्वेश्चन परफेक्टली ओवर हो गया। इसे भी आप अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हैं और आइदर यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस अगर आप पढ़ना चाहें तो वो भी बता सकते हैं ग्रुप पर, तो मैं उन क्वेश्चन पर फोकस कर लूं। Because CBSE syllabus cannot be covered in the few hours. It's a very vast syllabus. Okay. मैंने जो शीट बनाई है उस हिसाब से नेटवर्किंग के कुछ क्वेश्चंस मैंने डिस्कस कर लिए। चलिए कुछ जल्दी जल्दी हम लोग assertion and reasoning पे बात कर लेते हैं। String is immutable data type. Yes, right. String is immutable. What are immutable? Immutable means after creating the string, it cannot be manipulated, modified, change. कभी भी स्ट्रिंग मैनिपुलेट और मॉडिफाइड नहीं होती, जैसे लिस्ट हो जाती है। अगर लिस्ट में आपके 5 एलिमेंट्स हैं तो किसी भी एलिमेंट्स को आप चेंज कर सकते हैं, बट स्ट्रिंग के साथ ऐसा नहीं। तो आफ्टर क्रिएशन immutable data type cannot be changed. Yes, both are true. Assertion is true and R is the correct explanation of A. Python is a case sensitive programming language. Yes, case sensitivity है। case sensitivity का मतलब क्या है? अगर n is equal to 4 है तो can you print capital N? No. अगर आपने small n में 4 लिया है तो आपको small n ही यूज करना होगा। You cannot change the case of the variable. Okay. So Python is a case sensitive programming language. True. Python treats the variable name and name. Python treats variable name, name name, मतलब small से name and capital name as the same variable. No. तो इसका हमारा होगा assertion is true but the reason is false. Got it? Let me clear the screen. अब थोड़ा आगे चलते हैं and see, a stack operates on, stack पे भी assertion और reasoning है। stack operates on last in first out. This is the major principle of a stack. इसका मतलब ये है कि जो लास्ट एलिमेंट आया है वही सबसे पहले डिलीट होगा। This is a principle of a stack. In a stack, the element that is pushed last is the one that gets popped first. Yes, जो एलिमेंट लास्ट में पुश हुआ है सबसे पहले वही पॉप्ड होगा। ये पुश एंड पॉप्ड क्या है? जब हम किसी स्टैक में कोई एलिमेंट स्टोर करते हैं, दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड पुश। और जब हम किसी स्टैक से किसी एलिमेंट को रिमूव्ड करते हैं तो दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड पॉप। तो ये कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कि स्टैक ऑपरेट्स ऑन लास्ट एंड फर्स्ट आउट and the last element that is pushed will be popped first. So A is true and R is the correct explanation of assertion. Okay. Question number 8. The append method adds an element to the end of the Python list. Yes, yes, yes. I agree. इसका मतलब ये है कि अगर n एक लिस्ट है और उसमें 2 एलिमेंट्स हैं और अगर हम n डॉट अपेंड करते हैं 100, तो 100 विल बी स्टोर इन द लास्ट में आएगा, लास्ट में आएगा। तो द अपेंड मेथड एड्स एन एलिमेंट टू द एंड ऑफ पाइथन लिस्ट। यस, द अपेंड मेथड रिप्लेसेस ऑल द एलिमेंट ऑफ द लिस्ट विद द न्यू एलिमेंट। नो नो नो, अपेंड का काम एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स को रिप्लेस करना नहीं है, अपनी पोजीशन लास्ट में बनाना है।
तो assertion is right and R is not the correct explanation of A, तो R is false. तो हमने assertions and reasoning के कुछ क्वेश्चन देखे. अब देखो, shortest job first. Regarding the tuples on list, tuple can be nested. True. टपल कैन बी नेस्टेड का मतलब है कि टपल के अंदर एक और टपल आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है. टपल एलिमेंट कैन बी इजिली चेंज्ड. नो, टपल इज इम्यूटेबल डेटा टाइप, इट कैन नॉट बी चेंज. तो सेकंड ऑप्शन इज फॉल्स. लिस्ट कैन स्टोर टपल, यस. लिस्ट की बॉडी में टपल भी आ सकती है और टपल की बॉडी में लिस्ट भी आ सकती है. बुलियन वैल्यूज कैन बी कैलकुलेटेड लाइक दिस. क्या हम बुलियन वैल्यूज को इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल. जितने भी ट्रू हैं that will be 1 और जितने भी false हैं that will be 0. तो 1 plus 1 2, 2 plus 0 2. Answer will be 2. Okay. Now see this question. See this question. Tuple 1. Hello. एक और बात बता दें आपको कि tuple और list they are heterogeneous. What do you mean by heterogeneous? इसमें आप किसी भी तरह का डेटा स्टोर कर सकते हैं, like integer, then float, then string, then boolean. ओके, नो प्रॉब्लम. अब देखो, टपल के 0 इंडेक्स पे 1 है और 1 इंडेक्स पर हेलो है और ये दोनों एलिमेंट्स कंबाइंडली 2 पे है क्योंकि एक छोटी सी नेस्टेड टपल है और 3 पर ट्रू है. ओके, जब आप इस तरह से इंडेक्सिंग कर लेंगे तो आपको इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. अब टपल 2 का मतलब है कि सबसे पहले हम इस फैमिली में आए. This is called a family which is containing the two family members. तो टपल 2 मतलब हम इस सेक्शन में आए और 1 मतलब उस सेक्शन का 1 वाला पार्ट. तो ये 0 वाला पार्ट है और ये 1 वाला पार्ट है. तो 2 1 का मतलब हम 20 की बात कर रहे हैं. तो यहां से 20 निकलेगा एंड मल्टीप्लाइड बाय TUP 0. तो TUP 0 पे 1 है. सो द आंसर विल बी 20. Hope you understood. I'm trying to do my best कि हम कम से कम टाइम में आपको कितना करवा दें. अब देखो, यहां पर इस जगह पर हम इसको एक ही स्क्रीन पर रखते हैं. See, this is one of the very unique question. ठीक है, यूनिक क्वेश्चन. LST1 ये आपका बेसिकली जो क्वेश्चन है वो कॉल बाय रेफरेंस और दो कॉन्सेप्ट को शो कर रहा है. एक तो कॉल बाय रेफरेंस को शो कर रहा है, दूसरा इम्यूटेबिलिटी को और म्यूटेबिलिटी को भी शो कर रहा है. कैसे, मैं बताऊंगा आपको. ठीक है, जस्ट अ मोमेंट. लिस्ट 1, ठीक है, एक लिस्ट है. अब लिस्ट 1 को हम लिस्ट 2 में कॉपी कर रहे हैं. तो जब हम लिस्ट 2 में कॉपी करेंगे तो लिस्ट 1 के एलिमेंट एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स विल बी ट्रांसफर. ओके, एक बार चेक कर लें कि सब कुछ ठीक चल रहा है. जस्ट अ मोमेंट. इस बैच के जो कोऑर्डिनेटर्स हैं वो देख रहे हैं. द कोऑर्डिनेटर्स ऑफ द बैच इज देवांश, अमन. ओके, ठीक है. अगर आप लोगों की प्रिपरेशन ठीक चल रही है तो इस क्वेश्चन के बाद हम सेशन को रोक सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है, बस ये क्वेश्चन डिस्कस कर लें, देन वी कैन स्टॉप द सेशन. LST1 विल बी ट्रांसफर इन LST2. तो पूरा LST1 LST2 में ट्रांसफर हो गया. अब LST1 0, LST1 के 0 में यानी यहां पर क्या आ जाए, LST0 प्लस 10. मतलब LST0 पे तो 1 है, 1 प्लस 10 11. अब हमने LST2 को डिस्प्ले करा. चेंजेस हमने LST1 में किए बट प्रिंट कर रहे हैं LST2. तो ये चेंजेस LST2 में भी रिफ्लेक्ट हो गए. तो 11 2 3 4. LST1 को हमने क्लियर कर दिया. तो जैसे ही LST1 क्लियर होगी LST2 भी ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी क्योंकि LST1 एंड LST2 आर कंप्लीटली इंटरकनेक्टेड. शैलो कॉपी और डीप कॉपी का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा. तो LST1 डॉट क्लियर हो गया. अब प्रिंट LST2. अब LST2 को जब आप प्रिंट करेंगे तो वो भी एक एम्प्टी लिस्ट शो करेगा.
बिकॉज LST1 के क्लियर होने की वजह से LST2 भी क्लियर हो गया, तो अब LST2 की कोई लेंथ नहीं है, तो 0 आंसर। Okay, thanks to all of you and all the best for your tomorrow examination. एक मिनट, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है? अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। स्क्रीन की क्या कंडीशन है? स्क्रीन इज क्लियर और शेयर्ड? अच्छा, ठीक है। मैं बीच बीच में चेक करता रहता हूं। मैंने एक बार स्क्रीन को रिफ्रेश किया, अभी स्क्रीन शो हो रही है? कैन यू चेक द स्क्रीन इज विजिबल और नॉट? प्लीज चेक। स्क्रीन इज विजिबल? ओके, देखो अगर हम सीक की बात करें तो सीक का काम होता है, सीक एक मेथड है जो कि हमारे पोजीशन, कर्सर की पोजीशन को चेंज करता है। जैसे कि तुम एक बुक रीड कर रहे हो और तुम पेज नंबर 10 पे हो, और अगर हमने कहा सीक 20, तो तुम 10 से पेज नंबर 20 पे चले जाओगे। ठीक है, ये मतलब होता है सीक। पोजीशन को बदलता। ऑफसेट का मतलब होता है नंबर ऑफ बाइट्स टू बी मूव्ड। जैसे हमने कहा कि पेज नंबर 10 से पेज नंबर 20 पे जाओ, तो हमने तुमसे 10 पेजेस मूव करने के लिए बोला है। कितने पेजेस? 10 पेजेस मूव करने के लिए बोला है। तो ऑफसेट का मतलब होता है नंबर ऑफ बाइट्स, कितने बाइट्स कर्सर आगे बढ़ेगा अपनी करंट पोजीशन से। और सीक का मतलब होता है मूव करना। ऑफसेट बताता है कितना मूव करना है।